Life is changing for many, but for some, like Naseem, it is finally changing for the better. Resident of a small village in Sindh, Naseem is a farmer turned entrepreneur of a local female farmer organisation founded under Oxfam. Drawing women like Naseem outside their traditionally invisible and underappreciated role, the local organisation has offered hope and opportunity to small-scale women farmers. The 20-member group received collective credit and low-cost seed and fertiliser to cultivate their lands and secure food for their families. Reaping returns in the form of higher crop production, surplus seed for future cultivation, and income for their households. Female farmers are taking charge of their lives and living. पहिरियां माना थोरी सफ़ा थोरड़ी हुई माण्हू छा ॿुधाए त केतिरी आहे या केतिरी सफ़ा थोरड़ी हाणे माना असांखे आहे आमदनी कणिक मां बि खोड़ असांखे बचत थी आहे सभिनीनि खे असां सभु सुठी ज़िंदगी माण्हू गुज़ारे थो ऐं पटाटनि मां बि खोड़ असांखे बचत थी आहे माना ॻोठाणा जेके आहिनि नंढा नंढा हारी माना गॾिजी जेका तंज़ीम असां ठाही आहे नंढा नंढा हारी न माना ॻोठाणा गॾिजी इहे तंहिंजे करे असां तंज़ीम ठाही आहे त पाण में ॿधी करे ऐं कारोबार माण्हू जेको करे त पाण जंहिं पोखाई जो माण्हू करे थो त माना पाण खणी बाज़ार में वञी ॿियनि जे हथनि में माण्हू ॾिए थो उन खां पोइ बहितर आहे त पाण वञी उते मार्केट में खपाए त फ़ाइदो पवे. Not long ago, mother of 7 Naseem found herself struggling to feed her family. With no money to spare, the blow was worsened by unaffordable and volatile food prices and insecure access to land for cultivation. Hers is an oft-heard story in these remote agricultural regions of Pakistan. Each day, life's basic need is becoming a privilege for the very few. Inevitably, there is a human cost, more visible in poor rural communities than in urban settings. Unusual weather patterns that bring frequent and lengthy droughts, unpredictable rains, and intense floods are making farming unsustainable and difficult for those who are dependent upon and tasked with growing food. For these already vulnerable farming communities, the added dilemma of soaring food prices and high-cost agriculture input has amplified their vulnerability to meet their daily dietary needs. With the warning signs ever more clear and dire, new and insightful ways are needed to ensure better food and economic security for those who are struggling for survival. Muhammad Azam belongs to a rural producer organisation, a unique business enterprise for small farmers to bolster their agricultural potential. The 30-member locally driven organisation offers farmers more ownership and control over their lands, yield and profits. Working collectively, Muhammad Azam and other farmers can purchase agricultural inputs without relying on middlemen and sell the produce for better prices through direct access to markets. Oxfam, GB and European Commission ji madad sa asa jeko karobar chundiyo bij ठाण जो जेको असां शुरूआत कई ऐं उन्हनि असांजी मदद कई उन जे लाइ असांखे उन्हनि मशीनरी ॾिनी उन मशीनरीअ में ॿिज ठाहिण जी ग्रैंड मशीन ॾिनी जंहिंसां ॿिज साफ़ु कयो वञे थो उन खां अलावा मशीनरी में ज़रई ट्रैक्टर जा आलात जंहिंमें कल्टीवेटर केण राजाहर ऐं रूटावेटर ॾिना विया उन्हनि खे जे ज़रिए असां किराए ते उन्हनि खे हलाए तंज़ीम खे फ़ाइदो ॾेई सघूं हिन वक़्तु असां कणिक जे ॿिज जो वापारु करे रहिया आहियूं जेको असांखे तक़रीबन 2000 मण जो ऑर्डर मिली चुको आहे जेको 100 kg 80 रुपया साफ़ु करे असां ॾियूं था उन जे लिहाज़ सां असांजे तंज़ीम खे फ़ाइदो पहुची रहियो आहे ऐं हरनि जे हिसाब सां असां केण ऐं कल्टीवेटर 50 रुपया फ़ी कलाक जे हिसाब सां असां हलाए रहिया आहियूं अहिड़ी तरह असांजी तंज़ीम हिन महिल कारोबार जे मरहले में वधी रही आहे उमेद त अञा अॻिते वधंदी ऐं कामयाबु
तरीन बुनियादनि ते अॻिते वधी पहुचंदी ऐं इंशाअल्लाह इन इलाइक़े जे लाइ ख़ुशहाली पैदा थींदी ऐं किसान ख़ुशहाल थींदो. Communal grain banks are a supplemental contingency for the future. Managed by trained local men and women, are stocked through individual deposit of grain from every farmer in the community. In areas afflicted by prolonged droughts and at times unexpected floods, the banks serve as an emergency reserve to stay afloat. During lean times, farmers can also borrow seed for cultivation to be returned after the harvest. पहले तो बीज सही नहीं था. पहली बात तो ये था कि गंदम का जो बीज था ना वो सही नहीं था, तो मयार के मुताबिक नहीं था. और दूसरी बात ये कि अगर थे भी तो वो बहुत महंगे रेट में हम नहीं ले सकते थे. अभी जो ये ऑक्सफाम वाले बीज, साफ्को वाले दिया हमको बीज, तो वो बेहतरीन बीज है. उसका जो एवरेज है 40 से 45 हमारा गंदम का हुआ है. अकेले में ये था कि वो सही मुनासिब रेट वगैरह नहीं देते थे. मतलब कोई मार्केट में लेके जाना है, वो कोई गंदम है या कोई कपास है वगैरह, वो सही मुनासिब रेट में नहीं देते थे. अभी जो ग्रुप में है तो ग्रुप में ये फ़ायदा है कि हमें रेट जो है मार्केट का बहुत अच्छा मिलता है. इसलिए कि वो कट्ठे जो 10 मन का जो अगर लेके जाएं तो अकेले, तो उसके में बिल्कुल रेट जो है बहुत कम देते थे. अभी ये है कि 10-15 जो भी 100 मन हो गया, 150 मन हो गया, उसमें जो है हमें रेट जो है मुनासिब मकदार में मिलता है. जब ये अफसोस बनी उसके बाद लोग मुनज़्ज़म हो गए और उन्हें एक दूसरे की पहचान हो गई, तो उसके बाद जो है ना ये कुछ इनकी ज़मीन की काश्त करने में उन्हें कुछ आसानी हुई. ये बीज और खाद मियारी जो हमें तंजीम के यानी ऑक्सफाम जीबी या बीज वालों की तरफ से जो ताउन हो किया, इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसके तहत मिला है. अभी ये रकम जो है ना वो सारे का सारा ज़मींदार के पास ही जाता है, तो ज़मींदार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. जो एफ ओ लेवल पे हमने बचत किया इससे पहले, वो हमारे अकाउंट उधर खुले हैं, उसमें जमा किया हम लोगों ने. तो ये हमने मूंग माश के लिए ये फैक्ट्री यानी पीओ के थ्रू लगाने का जो प्रोग्राम किया, तो हमारा ये ख्याल है कि जब ये मूंग माश का सीज़न आएगा तो हम ये लोगों से ये मूंग माश वगैरह ख़रीद कर वहाँ फैक्ट्री में ले जाएंगे और वहाँ पे जब दाल बना के दूसरे इलाकों को बरामद या बेच देंगे, तो उसमें जो मुनाफा होगा वो तो पीओ का होगा, और जो असल पैसा है पीओ का, एफओ वालों का, वो जो है उनका फिर वैसे ही सेव रहेगा. Crop insurance is another unique intervention to reduce risk of crop failure or loss. With particular focus on women farmers, the idea ensures secure harvest income to recover from fallout of natural disasters and rising food prices. These are promising signs of progress with a growing potential. However, a mass call of action at all levels is still needed to fill the food security vacuum. It calls for government to provide radical and exclusive social assistance and safety nets for small-scale farmers to weather the shifting economic and natural environment. By designing broad agriculture policy that cover pro-poor investments, compensation for farmers in disaster-affected areas, and equitable land distribution programs, government can bridge the growing food gap. नी मार इधम ज़ेम फ़ायदा मिलेगा था. मार कुल्ले कार मार सिखतू हूँ, मारती ये माहे ने मार निंदों कुल्ले ज़ाल 5-20 ज़ाल निंदों ती मीटिंग आखनो ती सलाह सबब आखनो ती बचता कनो बचता बनो ती अकाउंटा बोलो ओदा एयर कनो तारों ताऊ ती बचता कनो ती का मार्केट दात होती. औलाक जाना नहीं जिठो पे माँ घर दिना ज़रूरत बर्त मशीन आ दुशायत का नहीं मैं रेडी आस्तो मारती का सटों पर रेडी नहीं माँ दुशायनो मशीन नहीं चक्का मारती ना खा माँ कर्ज ध्यान आसे ज़रूरतों माँ खारतों मारती चुक स्कूल आ पर दाखिल करता माँ चुक एक गर्म नहीं माँ तो स्कूल पढ़े सारे खाते नहीं ये वक्त मार एरगे परेशानी चीज़ें तंजीम फदा माँ जो कसे सी फादा नहीं चक्का करती नहीं माँ सी फादा नहीं चक्का उठता. There is still time to turn the tide during this crucial crisis. Smart innovations, bold enterprise, political resolve and stronger alliances can offer small women and men farmers a timely and much-needed path out of hunger and poverty. This present course of action
will also determine food security of future generations and make it through the very hard times that are imminent.